Hey guys, so today we are going to talk about something जो कि I recently realized in one of my calls with one of the clients. I mean not clients basically, that was technically a sales call, but like yeah, that is where I realized something and I just wanted to talk about it because this is so bizarre. Right. I hope you saw the video I recorded yesterday, right? About the Bangalore techie case. His like wife and everyone like जिसे शादी करी थी, they were bad people, right? So अभी क्या हुआ कि like yesterday I was on a sales call with a guy, ठीक है? And what happens is कि like I'm talking about talking to that person of like how things are and everything. अब again no disrespect, ठीक है? सबके अपने अपने perspectives होते हैं and I was also one such guy. So I'm like, अच्छा bro, have you had sex? And he's like, एक बार करा है. There was this girl with like I was in a relationship with and ये सब वो सब. So he's like कि भाई मेरे को like I'm good with girls and everything. He's not accepting that he's bad. ठीक है. What ends up happening is कि मैं पूछता हूँ अच्छा तो तुम्हारा क्या प्लान है? Suppose करो जैसा चल रहा है ऐसे ही चलता रहा तो what's your plan eventually? He's like कुछ नहीं, अरेंज मैरिज कर लूँगा. मैं कहा ओके. एंड सपोज करो अरेंज मैरिज करी तुमने तो लाइक डू यू थिंक एवरीथिंग विल फिक्स? कह रहा हाँ फिर तो फिक्स ही हो जाएगी ना. मैं कहा कैसे? कह रहा शादी कर लूँगा फिर तो मतलब आई हैव माई गर्ल, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना. तो मैंने कहा ओके व्हाट इफ योर गर्ल डज नॉट हैव सेक्स विद यू आफ्टर मैरिज? ही इज लाइक क्या बात कर रहा है, ऐसा तो होता ही नहीं है. मैं कहा होता है. ही वॉज नॉट रेडी टू बिलीव. एंड मोस्ट ऑफ यू गाइज सिंस यू गाइज आर नॉट एक्सपीरियंस विद डेटिंग, तुम्हें भी लगेगा नहीं ऐसा थोड़ी होता है. ऐसा क्यों होगा भला? लाइक अब तो बंदी ने शादी कर लिया, अब तो क्यों नहीं करेगी वो सेक्स? Let me tell you first of all, which is going to be surprising, but why majority of the arranged marriages, I don't know about love marriages, ठीक है? Again, I won't comment on something that I don't know for sure about, but by arranged marriages में you might not realize, but like majorly the guys don't have sex after marriage. अभी मैं भी like guys मतलब बंदे बंदियाँ मतलब basically the couple does not have sex after marriage. तो you like यार ये तो बकवास है, ये तो बोलने की बात है सिर्फ. What if I tell you something which immediately pops up in your mind, at least 10,000 examples of couples who are not having sex from the arranged marriage? ठीक है? So get ready for it. 1, 2, 3. All of our parents. Do you just realize? And this is a successful arranged marriage which you call, ठीक है? अब क्या देखो, I understand when I talk about this, I'm going to get a lot of fucking backlash. But bhai, at the same time, it's fine because I'm here to make a difference. I'm here to really educate you. I'm here to really shed light to things. And as I said, again, I'll be judged for it. I'll be judged the fuck out of it for the fact कि भाई क्या बोल रहा है, अपने parents के बारे में बोल रहा है. But bro, let's be honest now. Do you want to just live in the lies? Do you want to just accept कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है? And then cases like what I discussed yesterday happen? Or do you want to see the light even if the world is bad? You just have a glimmer of hope for the fact that you know what the world really is. Let's talk about it again. So for the guys who have been in relationships, because most of the guys haven't, right? India में ज़्यादातर बंदे virgin ही होते हैं, ठीक है? Or they have paid sex or something, but most of their lives they haven't been in a relationship. So since you guys haven't been in a relationship, जितने बंदे relationship में रहे हैं ना, they'll relate to it कि भाई you cannot convince a girl to have sex. You cannot logically convince her. ठीक है? Surprisingly, you will see so many guys who are in even relationships struggle with this thing. The girl does not want to have sex with them at times. Yeah, most of the times. There are relationships, trust me. मेरे पास आते हैं clients because you will be like ये कहाँ ही होता है? क्योंकि तुमने सुना नहीं यार. Once you get exposure, you will realize. So many clients come to me, they have been in 7-year relationships and they haven't had sex once. 7 years of relationship. एंड तुम्हें क्या लग रहा है ब्रो, वो बंदी के साथ जो रिलेशनशिप में है, जिसमें बंदी अपनी मर्जी से आई है, अगर बंदी उसमें तो उसके साथ सेक्स नहीं कर रही, तो डू यू थिंक दैट द गर्ल विल हैव सेक्स विद अ गाय हु शी वाज अरेंज्ड मैरिज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ हर पेरेंट्स? व्हाट डू यू थिंक? एंड एक और बात बताऊँ मेरे को. सपोज जस्ट लेट्स सपोज, ठीक है? बिकॉज अगैन द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू मेक यू थिंक, नॉट टू टेल यू व्हाट टू थिंक. ठीक है? आई जस्ट वॉन्ट यू टू थिंक. आई डोंट वॉन्ट यू टू बिलीव व्हाट आई एम सेइंग. आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट. बिकॉज सोचने में भाई कोई पैसा नहीं लगता. सोचने में आई एम नॉट चैलेंजिंग योर व्यूज. आई एम जस्ट मेकिंग यू थिंक. आई एम जस्ट वॉन्टिंग यू टू थिंक फॉर वंस. सपोज करो यू गेट मैरिड, अरेंज मैरिज हुई. बाई चांस द गर्ल इज लाइक यार ठीक है, वील हैव अ किड, आई डोंट माइंड, बट उसके बाद आई डोंट वॉन्ट टू हैव सेक्स, प्लीज मुझे अच्छा नहीं लगता. इट्स लाइक अ वेरी डर्टी थिंग. आई डोंट लाइक इट. ठीक है? जितना भी अब्सर्ड लगे सुन रहे हैं, मैं सोच एक बार सच में सोच के देखो. व्हाट इफ दिस हैपेंस? व्हाट्स योर प्लान ऑफ एक्शन देन? हाउ डू यू प्लान टू फिक्स दिस सिचुएशन? क्या करोगे तुम? एग्जैक्टली सोचो. लाइक डोंट बी लाइक कि हाँ मैं तो हैंडल कर लूँ. नहीं, सीरियसली व्हाट एग्जैक्टली डू यू प्लान टू डू?
क्या करोगे? ठीक है, एक चीज़, लेट्स मेक इट ईजियर. सपोज यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप एंड यू वांट टू हैव सेक्स विद अ गर्ल बट द गर्ल इज लाइक नो, एंड यू लाइक ऐसा कैसे होता है, इतना ज़्यादा होता है कि यू विल बी सरप्राइज्ड. ठीक है, अब आर women bad? Why are they not having sex with us? या why are the women not having sex with guys? Women are not bad, bro. Women are not bad. We don't know how to attract women. I mean, you guys don't know how to attract women. ठीक है, so consider it like this. There is a difference between जो जॉब तुम करना चाहते हो वर्सेस जो जॉब तुम्हें करनी पड़ रही है. मोस्ट ऑफ द पीपल नो व्हाट दे वांट टू डू. मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली नो फॉर अ फैक्ट कि भाई मेरे को वीडियो गेम्स खेलना पसंद है, या फिर मेरे को स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, मेरे को सिंगिंग करना पसंद है. दैट्स द थिंग दैट दे वुड एक्चुअली वांट टू डू. उनको तुम पैसे ना भी दो, दे विल वांट टू डू इट. एंड देन देयर आर जॉब्स विच यू आर डूइंग जस्ट फॉर सर्वाइवल. कंसिडर सेक्स एंड मैरिज जस्ट लाइक दैट, सेक्स एंड रिलेशनशिप जस्ट लाइक दैट. हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन कह लो है, या फिर एक मजबूरी है to get validation, to get support and everything, emotional support. हमारी एज है, सोसाइटी क्या कहेगी, इस वजह से we do a job. But if we were given time, if we were given to really give the chance, you know, like if the judgment was removed, we would actually want to pursue what we really love. ठीक है, consider ये जो job वाला सीन है, job is just like your marriage या फिर your relationship, and the passion that you actually have is just like your love या basically attraction. Most of the times women just get into a relationship because of the fact कि भाई अच्छे options हैं ही नहीं. And again, I don't mean to demean guys by saying that, but यार हमें attraction नहीं आती है. Mostly कोई सिखाता ही नहीं हमको. इंडिया में तो स्पेशली most of our parents, they have had arranged marriages. Like वही सेक्स के बारे में बात नहीं होती. They are not very like in love with each other and everything. ठीक है, उन्होंने हमें like they we had a good childhood. They like helped us learn so much. उन्होंने हमें इतना पाल पोस के बड़ा किया. That's all good. But if you think about it really यार, तो like they are just being held together is all. ठीक है, so guys like अगर ये situation है, so भाई like it's not a necessity that just because you're in a relationship or just because you're married the girl will have sex with you. And I'm not telling you to force her. You should never do it. I mean that's obviously against. अगर तुम एक करते हो ब्रो, तो तुम बेसिकली मेरी जो मैं बता रहा हूँ वो तो तुम समझे ही नहीं हो. ठीक है, you don't have to force her. She should want to have sex with you because she should be attracted to you. If she's not attracted, why are you guys together? ठीक है, just wanted to shed some light. So just think about it एक सेकंड के लिए. You are banking your hopes on arranged marriage. ठीक है, but let's be honest, do we want a marriage? We just want to have sex. Like seriously, हाँ यार, we also want to get married obviously. Like we would want a good family. भाई खुश रहें, जिंदगी भर रहें. But भाई like we are working so hard in life and everything. अगर हमें लास्ट में जिस चीज़ के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, सेक्स, वो ना मिला, won't you be dissatisfied? Won't you be angry? Won't you be pissed? Won't you feel bad? Exactly. But surprisingly, most of us are just walking towards that without even thinking कि हमारी current life में क्या चल रहा है. Yeah, the point is, think about it. I don't want you to change your opinion. I just want you to think about it. Okay. I hope this shed some light. I hope this gives you a new perspective. As I said, I don't want you to believe what I'm saying. I just want you to think about it. With that, I'll see you in the next one. Bye. That was crazy, right? But do you know what's crazier? Click this playlist right here and you will see in real life hidden camera footage of me approaching and attracting beautiful women in no time. I'll also be breaking down what I said to them, how I got them attracted in minute details. So don't delay guys, click the playlist right now and I'll see you on the other side.